Okay, good afternoon, everybody. Good afternoon to all my dear students of class 10th. So please join the class fast, as already I have sent the link to you in your WhatsApp group. Just click on that and join the class, everybody. Okay. So first of all, my dear, as you know that from 23rd of November, your exams are going to start. So please text me. Has everyone got the date sheet yesterday or today? Have all of you got the date sheet of your second online assessment, which will be start from 23rd of November? Okay. So all of you have got the sheet? Okay, good. Date sheet, I think have you got it? So now please remember that from 23rd November to 30th November. From 23rd November to 30th November, your second online assessment will start. Okay? Yeah, I understood, Vilas. Vilas Lohil is asking about the syllabus. Yeah, dear, I understood that. If the date sheet came, then after that student thinking about the syllabus. Okay. So first of all, my dear, whenever you are discussing about the syllabus, so how many total chapters you discussed? Chapter number 1, then 2 and 3. Okay, chapter number 1, 2 and the 3. And in the chapter number 3, what the syllabus will come? Chapter number 1 and 2 complete. ये आपके full chapter होंगे. Chapter number 1 and the chapter number 2 full chapter will come. Okay, and in the chapter number 3, if you are talking about the chapter number 3, so here till chemical properties of metals and non-metals. Okay, chemical properties of the metals and or you can say till metals. Chemical properties of metals. Okay, physical also you can understand. Physical and chemical properties. Okay, so this is the syllabus of your this online assessment. Okay, the total 3 chapters are there. 1 and 2 full chapter will come, and in the chapter number 3, your introduction, then physical and chemical properties. Let me clear one thing: physical properties of the metal and non-metal both, but the chemical properties of the metals. Okay, so this part will come in your second online assessment. Is it okay to everybody? Is it okay? Okay, is it visible to everybody? The syllabus is visible? Okay, so either you can take the screenshot, of that, or you can write down whatever you want. And you will also get the syllabus in your group from your class teacher. They will also send you. So this is the syllabus of the chemistry. Okay, Vastavi is writing, sir, it is blur. Okay, is it okay? Vastavi, now is it okay, dear? Vastavi, please text me. Now is it visible to you? Okay, so now, if you remember, dear, yesterday in our last class, what we discussed that, I think on Monday I did your class. Right? So this is your second class of the chemistry in this entire week. Right? In this particular week, this is your second class of chemistry. So now what we are going to discuss today, if you remember, dear, in our last class, what I discussed with you. In our last class, I discussed with you about how we are able to identify that any element is the metal or the non-metal or the metallide or the noble gas. Okay, this part already we people have discussed. So now we are again to discuss about this particular chapter, metals and non-metals. फिर से अपन पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आज क्या पढ़ेंगे देखो. So in our last session, what we discussed that with the help of the electronic configuration. With the help of the electronic configuration, we are able to identify that any element is the metal or the non-metal or the metallite or the noble gas with the help of their valence electron. Okay?
Suppose again we are going to start with the example potassium 19. Suppose chlorine atomic number 17 and suppose argon atomic number 18. Okay. Suppose these three elements we are having and silicon atomic number 14. Okay. Suppose I am saying that these four elements are there and now we have to identify out of these four metals which is the metal, which is the non-metal, which is the noble gas and which is the metalloid. Okay, suppose this is the question. So can you text me? Can anybody solve it? Can anybody text me? Out of these four elements, potassium, chlorine, argon and silicon. Okay, can you identify which is the metal, non-metal and the metalloid and the noble gas? Because already we people discussed this question in our last class. So can anybody text me? Okay, so Ashish wrote argon is the noble gas. Very good Ashish. Okay, very good Vilas. He wrote chlorine is the, okay. Yeah, Neeraj. Okay, good afternoon Neeraj. Potassium is the metal, very good. Then what about others? Yes, very good Vilas. Chlorine is the non-metal, very nice. ठीक है, तो अभी क्या होगा, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2881, ठीक. क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 287, आर्गन अगर आप करोगे तो 288, सिलिकॉन अगर करोगे तो 284. ओके 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 सलोनी, okay Saloni, very good. So now these are the electronic configuration of these elements. ठीक है ना, ये सब हमारे electronic configuration हो गए. So what we can say that in the potassium how many valence electron 1, in the chlorine how many valence electron 7, argon how many valence electron 8 and silicon how many valence electron 4. ठीक. So what we can say that if the valence electrons are the 1, 2 or the 3, then what we can say it is the metal. तो अभी देखो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, इसका मतलब जो हमारा पोटेशियम है that is the metal. Potassium is the metal. ठीक, very good, शाबाश. So I think most of the student have wrote the right answer, very nice. क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7, तो ये साहब हो गया हमारा नॉन मेटल, that is the chlorine. ठीक, then argon valence electrons are the 8, so it is the noble gas, argon, है ना, argon is the noble gas, and silicon valence electrons are the 4, so it is the metalloid, silicon. ठीक है, so this is the basic thing to identify that which is the metal, non-metal, noble gas, and the metalloids are there. But my dear, in this particular chapter, basically we have to discuss about the metals and the non-metal. So I think it's very easy thing to identify the element is the metal or the non-metal with the help of valence electron. And how will you get the valence electron? With the help of the electronic configuration. So now my dear, my request to everybody, you please learn the atomic numbers, atomic number and electronic configuration, है ना, कम से कम स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स तो याद ही रखो, 1 to 20, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना. यू प्लीज लर्न द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ 1 to 20, है ना, कम से कम 1 से 20 तक के एटम याद रखो. जैसे 1 हाइड्रोजन, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसे एटॉमिक नंबर का लिस्ट बना के कम से कम आप 20 तक उन्हें याद रखो, क्योंकि आपके क्लास 10th में बेसिकली एटॉमिक नंबर 20 तक ही फोकस ज्यादा है, तो वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, चलो. नाउ सो आई थिंक दिस पार्ट इज ओके टू एवरीबॉडी. इज दिस पार्ट ओके टू एवरीबॉडी? आइडेंटिफाई दैट व्हिच इज द मेटल, नॉन मेटल एंड द मेटलॉइड. इज इट ओके? चलो आगे बात करते हैं ना. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक. आगे क्या पढ़ना है देखो. सो नाउ आफ्टर दैट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. So now after that, now we have to discuss about the properties of. अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना है. इसके पहले एक और अच्छी सी चीज समझ लो. देखो क्या बताना है. देखो, metals are the very much important part. Metals are electropositive. Metals are electropositive.
ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या हुआ देखो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि दीज आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज दे हैव tendency to lose its valence electron, क्योंकि मेटल्स के अंदर टेंडेंसी होती है कि अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो लूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई टुक द केस ऑफ द सोडियम मेटल। अब एटॉमिक नंबर क्या हुआ 11, अगर इनके पास एटॉमिक नंबर 11 है तो ये हुआ 281। This is the electronic configuration of the sodium 281. How many valence electron is the one only? It means it is the metal. और अगर ये मेटल है तो सोडियम के अंदर क्या टेंडेंसी है कि ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा Na+. Okay, so this is again one more property of the metals. कि metals are the electropositive in nature. Anybody can ask to you कि why they are the electropositive. So they are the electropositive in the nature because they have tendency to lose its valence electron, and whenever it will lose the valence electron, that number of the positive charges will come on that. ठीक है, जैसे suppose if I am saying that the case of the magnesium, ये मैग्नीशियम का केस ले लिया तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12। अगर 12 हो गया तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कैन एनीबॉडी टेक्स्ट मी what will be the electronic configuration of the magnesium? Can anybody text? What will be the electronic configuration of the magnesium metal? Can you write it? Yes, very good, shabash. So Ashish, Yog, Saloni, Tanali, they all wrote the right answer. Very nice. So the electronic configuration, very good Neeraj, बहुत बढ़िया. So the electronic configuration will be 282, है ना? बहुत बढ़िया, शाबाश. सिबल, निधु, सानिया, विनीता, सारे बच्चे बढ़िया लिख रहे हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 282। गुड, शाबाश भार्गवी एंड सानिया। ठीक, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गए ना, और अगर इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, सो मैग्नीशियम कैन लूज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2, बिकॉज़ देयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द 2। तो अगर मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा Mg++, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। So that's why you can say the metals are the electropositive in the nature. Very good, Yog. Yog Ambekar also wrote the right answer, but my dear Yog, second alphabet should be in small letter. Okay, Yog, याद रखना है, गलती मत करना एग्जाम में। आप अगर मैग्नीशियम लिखते हो तो पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा, फिर आप ऐसे लिखो। किसी भी एटम का सिंबल लिखने का ये तरीका होता है। If the 2 alphabets will come, then second alphabet should be in small letters. Okay? Is it okay, Yog? So this is again one more property of the metals. ये भी एक metals की property हो गई. Now after that, so if the metals are the electropositive in the nature, so then the non-metals are the electronegative in the nature. जैसे हमारे metals electropositive हैं, वैसे ही हमारे non-metals electronegative. ठीक है? They are the electro Okay, कोई बात नहीं हो, कोई बात नहीं. Okay, so now if I'm talking about the non-metals, अगर आप non-metals की बात करते हो, ठीक? So what you can say about the non-metals? The non-metals are electronegative in nature. They are electronegative in nature. ये electronegative है. They are the electronegative in the nature. Why they are the electronegative in the nature? Because they have tendency to gain electron. देखो बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में, जो पुअर है वो प्लस है और जो रिच है वो माइनस है। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो पावरफुल बनेगा, मतलब वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो पुअर हो जाएगा, उस पे चार्ज कैसे आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक, सो नाउ बिकॉज दे हैव टेंडेंसी, because they have tendency to gain electrons, क्योंकि वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, to gain electrons, okay, because they have tendency to gain electron. ठीक है ना? क्यों गेन करते हैं? अच्छा, anybody can text me why the elements loses or gain electrons? Very very good question. बहुत सोच समझ के बताना होगा। मैं देखता हूं कौन सबसे पहले ये आंसर देगा।
why the elements loses or gain electrons? It's a very good question, technical question है, सोच के आंसर देना, ठीक? Why the elements loses or gains electrons? Anybody can text? कोई भी एलिमेंट अगर है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन क्यों करता है? Why? Can anybody text? Yes, very good, Sibal. Sibal wrote very excellent answer. Very good, Sibal. शाबाश, बहुत बढ़िया लिखा. To complete its octet. To complete its octet. अपने octet को complete करने के लिए, अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल बनाने के लिए, जैसे मैंने आपसे बोला कि सोडियम का अगर आपने एग्जांपल लिया था तो आपने लिखा था 281, ऐसा लिखा था. अगर ये इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये 2,8 हो जाएगा, और अगर वो 2,8 हो जाएगा तो मतलब उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो फुलफिल्ड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. सो यू प्लीज रिमेंबर दैट एनी एलिमेंट लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन टू गेट इट्स स्टेबल स्टेट. ओके, या वैष्णवी, गुड. टू फिल द आउटर मोस्ट शेल. आप फिल वर्ड अगर हटा दो, है ना, ओके, कोई बात नहीं राहुल यार, कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, लेक्चर सेव है, आप बाद में भी देख सकते हो, बट अभी ज्वाइन कर लो, ठीक है. तो व्हाई एनी एलिमेंट लूजेस और गेन इलेक्ट्रॉन? एनी एलिमेंट लूजेस और गेन इलेक्ट्रॉन टू गेट द स्टेबल स्टेट. मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आप वहां पे फिल वर्ड मत लिखो. ओके सिबल एंड वैष्णवी, बेटर यू राइट टू गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और टू गेट द स्टेबल स्टेट. स्टेबल स्टेट का मतलब कब होता है? जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है ना. जैसे मैंने आपसे बोला, चलो खैर ये तो बात थी कि कब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होंगे, बट बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन मेटल्स. आप नॉन मेटल्स की बात कर रहे हो. सपोज वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, है ना. सपोज वी आर टेकिंग द केस ऑफ द ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8. सो एनीबॉडी कैन टेक्स्ट व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? What will be the electronic configuration of oxygen? Anybody can text? कोई लिखेगा भाई? What will be the electronic configuration of? Okay, very good, शाबाश. So it become 2,6. ये 2,6 हो गया, है ना. Very good, बहुत शानदार. So भार्गवी, सानिका, सलोनी, नीरज, वैष्णवी, सानिया, आशीष, लक्ष्मण, निधु, रणविजय, सबने बढ़िया लिखा है, शानदार लिखा है. वेरी गुड. सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,6. ओके, तो राहुल, मृदुला और वनिता ने भी बिल्कुल सही आंसर लिखा, ये 2,6 हो गया. अब एक बात बताओ, कैन एनीबॉडी टेक्स्ट मी हाउ, ये बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से बताना. हाउ द ऑक्सीजन एटम कैन get its stable electronic configuration. सोच समझ के आंसर लिखें, ठीक. How the oxygen atom can complete its octet, या how the oxygen atom come in their stable state. ऑक्सीजन एटम को अगर हमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना है तो क्या करना होगा? यस, वेरी गुड सिबल, बहुत बढ़िया, शाबाश. सो कैन यू टेल सिबल how many electrons are required, or any other student can also tell? Yes, very good. So Lakshman ने तो और भी बेहतरीन आंसर लिख दिया, by gaining the 2 electron. Very good, शाबाश, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बढ़िया लिख रहे हैं, शानदार. योग, सिबल, सानिया, सलोनी, नीरज, योग, सानिका, बहुत बढ़िया, राहुल ऑल्सो. तो अभी क्या होगा? अगर ऑक्सीजन एटम को हम 2 इलेक्ट्रॉन दे दें प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2,6. अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे, कैन एनीबॉडी टेक्स्ट हाउ मेनी नेगेटिव चार्ज विल कम? If the 2 electrons you are adding to the oxygen, then how many negative charge will come on oxygen atom? Yes, very good, -2. ये माइनस के 2 चार्ज आ जाएंगे. अब ये माइनस के 2 चार्ज आ गए तो उसके हिसाब से ये क्या हो गया? 2,8. ये 2,8 हो गया. तो जैसे ही इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले, इसने अपने आप को स्टेबल कर लिया. तो दैट इज द वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स, कि मेटल्स आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. नॉन मेटल्स आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू
gain electron. And why these elements loses or gain electron? To get stable state. अपने आप को stable state में आने के लिए वो ऐसा करते हैं. ठीक है? Is it okay to everybody? ना. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि अपने को प्रॉपर्टी पढ़नी थी कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, सॉरी नॉन मेटल्स इलेक्ट्रो नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आएगा, और मेटल्स जो हमारे होंगे वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे क्योंकि उनका पॉजिटिव चार्ज होगा. ठीक है? So that is the basic thing. Yes, very good. बहुत बढ़िया लिख रहे हो भाई सब लोग. ठीक. Now after that the second thing of the chapter is बहुत important है ये, and that is the physical properties of metals, physical properties of metals and non-metals. Physical properties of the metals and the non-metals. ठीक है ना? क्योंकि आप अगर प्रॉपर्टीज आप पढ़ने जा रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड देन यू विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी. ठीक. सो नाउ वी हैव टू गो थ्रू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स. ठीक. तो अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हो मेटल्स और नॉन मेटल्स का, ठीक है ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. So what about the physical property? आपको पता है ये हेडिंग आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि आप कई बार इसे पढ़ चुके हो, क्लास 6-7 से पढ़ते चले आ रहे हो. जैसे metals are the ductile in the nature, they are the non-ductile, they are the malleable, they are non-malleable, है ना. tensile strength they are having, they don't have the tensile strength. They can conduct the heat and electricity, they cannot conduct. So like that, so many physical properties are there which we can easily discuss with. आप पहले भी पढ़े बैठे हो तो आई होप इट इज नॉट अ वेरी टफ पार्ट फॉर यू. ठीक है ना? अच्छा, एनीबॉडी कैन टेल आउट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस? आउट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस? एनीबॉडी कैन टेक्स्ट आउट ऑफ मेटल्स एंड, यस, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. So metals are the lustrous in the nature. बहुत बढ़िया, ये तो क्वेश्चन तैयार हो गया, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बढ़िया लिख रहे हैं. ठीक. बट कैन यू टेक्स्ट एनी नॉन मेटल्स विच इज लस्ट्रस? एनी नॉन मेटल, डू यू नो? अब ये अच्छा क्वेश्चन हो गया आपके लिए पेपर के हिसाब से. कैन यू टेक्स्ट एनी एग्जांपल ऑफ द नॉन मेटल विच इज द लस्ट्रस इन द नेचर? कैन यू टेक्स्ट? Okay, Ashish Bhatki wrote diamond. Sorry Ashish, diamond is not the example, my dear. Diamond is not the example. Iodine is okay. Iodine is okay. Good. Better you write. मैं बताता हूँ देखो क्या है. दो होते हैं, एक ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट एंड आयोडीन. प्लीज रिमेंबर. ठीक है ना? ग्रेफाइट एंड आयोडीन. यस, एग्जैक्टली. Graphite and iodine are the two non-metals which are lustrous in nature. ये दो हमारे ऐसे non-metals हैं जो lustrous in the nature हैं. ठीक है? तो वही मैंने बोला कि you please go through that. आप जैसे जैसे इन properties को पढ़ोगे तो वैसे वैसे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा. ठीक. चलो, now the second question. Out of metals and the non-metals, which are the conductors? Anybody can text? Out of metals and non-metals, which are conductors? Yes, very good, शाबाश, very good आशीष, बहुत बढ़िया. Metals और non-metals में हमारे metals conductors होते हैं. Very good. So आशीष, राहुल, वैष्णवी, लक्ष्मण, रणविजय, तनाली, योग, सानिया, सानिका, सलोनी, भार्गवी, बहुत बड़ी लिस्ट है यार. मृदुला, सारे बढ़िया लिख रहे हैं. वेरी गुड. निधु ऑल्सो. आपको पता है मैं ये नाम क्यों बोलता हूं, है ना? इसलिए बोलता हूं कि अगर बच्चे ने बड़े मन से, बड़े प्यार से, बड़े ढंग से अपना आंसर टाइप किया है तो उसको फील बैड नहीं होना चाहिए कि यार आई एम टाइपिंग द आंसर, आई एम गिविंग द आंसर बट टीचर इज नॉट गिविंग द नेम ऑफ द स्टूडेंट. तो अगर मैं भी आपकी जगह बैठूंगा तो आपको भी लगेगा यार लिख रहा हूं तो एक बार तो नाम बोल दे यार. ठीक. सो इट्स अ वेरी गुड, वेरी नाइस, इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग. थैंक यू रणविजय, थैंक यू डियर, शाबाश. Actually, Ranvijay, it is only because of that, because I have got the such type of the wonderful student, right? It's because of you people only. ठीक है ना? तो Ranvijay, it's not the credit goes to me, it's credit goes to you all.
है ना, यू पीपल आर द वेरी गुड स्टूडेंट, है ना, तो आप ऐसा मन करता है बोलने। गुड, चलो, सो मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स, सो व्हाट यू कैन से, मेटल्स आर द कंडक्टर and non-metals are the non-conductor. But again a very good question. Can you text me any non-metal which is the conductor? Any non-metal? अरे वाह, क्या बात है, आशीष भट्ट की तो बिल्कुल बटन लिए बैठा था और मार दिए छक्का। वेरी गुड, सीधे गेम को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर और बना दिए आधा दर्जन रन। वेरी गुड आशीष, बहुत बढ़िया। ठीक, सो आशीष, सानिका, रणविजय वैष्णव, फिर से वो बहुत लंबी फौज आ गई है। ठीक, तो वेरी गुड। सो द कंडक्टर इज द ग्रेफाइट, बहुत शानदार। ठीक है, तो नॉन मेटल साहब हमारा ऐसा भी है जो कंडक्टर का एग्जांपल करेगा, एंड दैट इज द ग्रेफाइट ओनली। ठीक, तो वो साहब हमारा ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, चलो, वेरी गुड। एक और बढ़िया, आप कहोगे सर सब इधर ही भरते जा रहे हो, इधर का भी तो भर। दुनिया बैलेंस होनी चाहिए, अनबैलेंस नहीं कर सकते, है ना, बैलेंस होना चाहिए ना, अनबैलेंस नहीं कर सकते। ठीक है, वही बात है ना, जब देखो तब बच्चों को सब समझाते हैं, अरे पढ़ो, अरे पढ़ो, अरे पढ़ो। ठीक, तो बच्चा भी तो बोलेगा, अरे सर पढ़ाओ तो पढ़ाओ तो पढ़ाओ, तो हम पढ़े तो पढ़े तो पढ़े, है ना। तो चलो, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ठीक, सुनना, अगर मेटल्स की बात करते हैं तो कैन यू टेक्स्ट आउट ऑफ द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स इज एनी एग्जांपल ऑफ द मेटल विच इज लिक्विड। हाँ, चलो ऐसा बोल सकते हैं, यस, वेरी गुड। एनी एग्जांपल ऑफ द मेटल विच इज लिक्विड इन स्टेट, एनी एग्जांपल ऑफ द मेटल विच इज लिक्विड, जो लिक्विड है भाई, बोलो। क्या बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात तो मुझे समझ में आ जाती है कि ये जब 12:30 बजे वाली क्लास होती है ना, तो यार आप बढ़िया शानदार नाश्ता करके बैठते हो और शानदार एकदम लंच लेके बैठते हो और झड़ा झड़ा आंसर मारते हो और क्या गजब लिखते हो कि मजा आ जाता है, बहुत शानदार। ठीक, 10th की फौज और करती रही है मौज और आगे भी करेगी मौज। वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस। So what we can say that which is the metal which is the liquid state, so that is the mercury, है ना, Hg। मरकरी साहब हमारा वो मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है। तो आप बता दो नॉन मेटल की तरफ, कोई नॉन मेटल बताओ भाई, इज एनी नॉन मेटल विच इज लिक्विड इन स्टेट, एनी नॉन मेटल विच इज लिक्विड इन स्टेट, बोलो भाई। अरे वाह, क्या बात है सानिया, बहुत शानदार, अब की तो मार दिया तो वैसे, पहले 6 तुमने मारा, वेरी गुड। तो सानिया फुले, तनाली, योग, भार्गवी, वैष्णवी, सानिका, मृदुला, लक्ष्मण। अच्छा, एक गैप के बाद बॉयज का नाम आया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, शानदार। So which is a liquid, you can say it is a bromine water। मैंने कहा भी था ब्रोमीन वाटर के नाम से जाना जाता है, बोलते ना ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल। बहुत बढ़िया, चलो अब एक अच्छा सा सवाल पूछता हूँ, है ना, थोड़ा सा एक ट्रिकी सवाल हो जाए, बट मुझे लगता है आप बता ले जाओगे। कैन यू टेक्स्ट एग्जांपल ऑफ द मेटल व्हिच कैन इजीली कट विद अ नाइफ? कैन यू टेक्स्ट मी? ठीक है, इसको बता डाला तो लाइव झिंगा लाला। बताओ, कैन यू टेक्स्ट मी व्हिच इज द मेटल व्हिच कैन बी कट विद अ नाइफ? वेरी गुड आशीष, बहुत शानदार, बढ़िया आंसर लिखा है। और कोई भाई, और भी बताओ। यस, वेरी गुड शिवल। So again the students are writing very nice answer कि these sodium and the potassium are the such type of the metal which are very soft and which can be cut through a knife, which can cut by a knife. Very good, बहुत बढ़िया, शानदार, शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त, बढ़िया आंसर लिखा है भाई। ठीक, so this is the property of the physical property which will come of the metals and the non-metals. So I think you can go through that, and one thing today I will do, I will give the notes to you also। तो अब बड़े आसानी से एक आपके एनसीईआरटी में भी है और बड़े आसानी से आप 8-8, 10-10 पॉइंट मेटल्स नॉन मेटल्स के पढ़ के रख लो, दैट इज इनफ फॉर यू। हाँ, बट क्लास 10th के स्टूडेंट हो, स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, तो क्वेश्चन का भी स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ करके आता है। तो ऐसे जो टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा इनकी तरफ फोकस करो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, चलो, सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स, and then we are coming to the metals chemicals property, because only that part will come in your syllabus। क्योंकि आपके जो सिलेबस में आ रहा है ऑनलाइन असेसमेंट 2 जो हो रहा है, वहां पर केवल मैं मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टी ही पूछूंगा।
वहीं तक आपको मैंने सिलेबस दिया है ना, और उतनी ही केमिकल प्रॉपर्टी पूछूंगा जो मैं आज पढ़ाऊंगा. Till that only your syllabus will come. Okay, whatever the lecture I am taking from here, how much portion it will be completed by today only that part will come in your syllabus. अच्छा, देखो बात करते करते एक बड़ी मजेदार सी बात आ गई. Please, it's a last reminder to you, everybody please join the Google Classroom, because this time we teachers will take your online assessment through Google Classroom app. Okay? So again, the kind request as well as the order to all of you, those who have not joined the Google Classroom app till now of all the subjects, please join it by today only. Link I think already teachers have sent to you. ठीक है ना? So please join the Google Classroom. It's a compulsory for you. क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा सेकंड ऑनलाइन असेसमेंट वो उसी के थ्रू होगा. आप अपने जो स्क्रीनशॉट्स भेजते हो आपको इस बार गूगल क्लासरूम में भेजने होंगे, जिससे हमारे पास एक रिकॉर्ड रहेगा, टाइमिंग भी रहेगा, कितने बजे किसका किसका पेपर आ गया, तो लेट कमर्स नहीं होंगे. ठीक है ना? और गूगल क्लासरूम में ऑटोमेटिकली दिखा देगा अगर आप लेट सबमिशन करोगे. So that's why we are just trying, we will conduct our second online assessment through the Google Classroom app. So again, I am reminding to you, those who have not joined till now, okay, please submit. Okay, don't worry Neeraj. Don't worry Neeraj, we will give some more time as compared to the online assessment first part. This time we will give 5-10 more minutes to you. Okay, suppose हम लोगों ने आपको पिछली बार 15 मिनट्स दिए थे, तो इस बार आपको 20 से 25 मिनट दे देंगे अपलोड करने के लिए. तब तक वो आसानी से हो जाएगा. ऑलरेडी वी आर जस्ट ट्राइंग. आई थिंक आप लोग भी अपने असेसमेंट्स को गूगल क्लासरूम में कर रहे हो. ये आसानियां, वी हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट्स डियर. आपको स्क्रीनशॉट ही लेना है, उसी स्क्रीनशॉट का पीडीएफ बना लो है, या वो तो खैर पीडीएफ में अपलोड होता है, और फिर आप उसको अपलोड करोगे गूगल क्लासरूम. ओके, चलो. सो नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल. द सेकंड थिंग इज दैट chemical properties of metals. Chemical properties of the metals. Okay, in the chemical properties of the metal. अच्छा चलो, एक बढ़िया सा एक दिवाली आ रही है ना, डिस्काउंट दे देते हैं. डू यू वांट वन डिस्काउंट? है दिवाली में डिस्काउंट चाहिए क्या सिलेबस में? डू यू वांट डिस्काउंट? टेक्स्ट मी. Okay, so no chemical property will come. Okay, till physical property of the metals and non-metals your syllabus will come. तो साहब इसको कर दिया टाटा बाय बाय. ओके, दे दिया भाई डिस्काउंट आपको. ठीक है? So only till physical properties of the metals and the non-metals will come in your syllabus. Okay, so the chapter number 1, chapter number 2, and the chapter number 3, your introduction part about the metals and the non-metals, then the characteristics means physical properties of the metals and non-metals will come. Okay, so thank you so much dear. Once again, one more big hi, and again tata, goodbye, bye. Thank you so much. Okay, goodbye dear.